Yesterday I was telling you the applications of dimensions. Now in that series I have told you two one. First is the principle of homogeneity and second is to check the correctness of the physical formula. Now third one is to deduce the relation among the physical quantities. Clear? How can you find the physical relation between physical quantities? For this one we take the example. Let us derive an expression for the centripetal force acting on a particle of mass m moving with a velocity v in a circle of radius r. Clear? तो फॉर दिस वन अब इसमें देखिए कैसे रिलेशन हम फाइंड करेंगे. तो उसके लिए क्या है, हमने फोर्स लिया. सिंस वी नो दैट फोर्स इज डिपेंड्स अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस. क्लियर ना? तो अब ये कैसे रिलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए मान लीजिए लेट, अब इस केस में लेट f is proportional to m to the power a, v to the power b, r to the power c. Clear? Now for if two quantities are in proportionality, then for equating we take a constant. Therefore we take a constant if equal to f equal to k m to the power a, v to the power b, r to the power c. Clear? Now according to homogeneity, principle of homogeneity, we know that the dimensions of both sides should be the equal. Therefore, on writing dimensions both sides, then the dimension of force is m l t minus 2. Clear? And constant की dimensions नहीं लिखेंगे. Dimensions of m is mass m, power a. Dimension of velocity l t to the power minus 1 to the power b. Clear? R, radius measured in the length and its power is c. Clear? Now solve it. Now m to the power a, l to the power b, t to the power minus b, l to the power c. And again, since base are same, then power are added. Then m to the power a, l to the power b plus c, and t to the power minus b. And left hand side m l t to the power minus 2. Clear? You get like this one. Now in previous classes you have studied in your mathematics, when the base of both sides are equal, then it is sure that powers also should be equal. Clear? Therefore on comparing both sides, on comparing the powers of both sides, we get m to the power here a, here m to the power is 1, here is 1. Therefore we can say that a equal to 1. Clear? Equation number 1. Clear? And l to the power b plus c, it is equal to, here is the l to the power 1, then it is also the 1. Clear? And t to the power here is minus b, and t to the power here is minus 2. This is the equation 2 and this is the equation 3. Clear? Now from equation 3 we get b equal to minus 2.
plus 2. B equal to plus 2 minus minus will be cancelled out. Clear? Now from equation 2, B plus C equal to 1. Therefore 2 plus C equal to 1, then C equal to minus 1. Clear? And from equation 1, A is the 1. From equation 1, the A equal to 1. Therefore value of A, C and B. Now putting these values in relation, finally जो assume किया था. Clear? Now putting the values of A, B and C in required relation, then F equal to a constant K, m to the power 1 and v to the power 2 and r to the power minus 1. Therefore it can be written as F equal to a constant K m v square upon r, where K is the proportionality constant. लिख देंगे where K is a proportionality constant. और अभी आगे बताऊंगा limitations में. Then you cannot find the value of K anywhere by the dimensional analysis. Clear? Now एक बचा है, that is your fourth one, is to convert the physical unit, to convert the physical unit from one system to another, system to another. This is the last use. Clear? So first of all, I have told you about the quantity. Quantity can be measured in the two ways. One is the numerical value, second is your standard. Then we use here. How? Suppose that we want to convert any quantity. तो इसमें assume करना पड़ेगा. जैसे for example we take the unit of force in MKS system. In MKS system is Newton, denoted by capital N, and in CGS system is dyne. Clear? Dyne. So how can you convert from the newtons to dyne? So for it one, I have told you that it is also the quantity Q1, and this is also physical quantity is Q2. Clear? Q2. Then you have to write that Q1 it is equal to Q2. How? For example, 1 kilogram it is equal to 10 to the power 3 gram. Clear? So kilogram in MKS system, gram in the CGS system.
The relation between the Q1 it is equal to Q2. Up, suppose that the numerical value of this one here is the N1, then NU1 it will be equal to N2 and U2. Now what is the N2, N1, U1? तो यहाँ बताएंगे N1 is the numerical value in MKS system, and U1 is unit in fundamental units, unit in fundamental units like M1, L1 and T1. Therefore, U1 will be equal to M1, L1, T1 to the power minus 2. It means dimension of force. Clear? Similarly, we take N2, numerical value in CGS system and U2 unit or dimension in fundamental units of other system, second system. Then U2 it is equal to M2 L2 T to the power minus 2. Clear? Now by that relation N1 U1 it is equal to N2 U2 it is आप भी पता है, अभी पीछे हमने बताया, जैसे फॉर एग्जाम्पल the unit of the length in MK system is meter and in CGS system is centimeter. Now what the relation between both? 1 meter is equal to 100 centimeter. Clear? Similarly here by formula आपको लेना है N2 U2 इक्वल टू N1 U1, क्योंकि हमने N2 की वैल्यू फाइंड करनी है, हमको लाना है 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन. तो N2 की जगह हम रखेंगे 1, सॉरी N2 निकालना है, इसकी जगह हो जाएगा M2 L2 T to the power minus 2 equal to N11 means 1 and M1 L1 T1 to the power minus 2. You have to calculate N2, therefore we can write here N2 equal to M1 L1 T1 to the power minus 2 upon M2 L2 T to the power minus 2, like this one. Clear? Now you have to find the relation between both M1 and M2. M1 is the fundamental quantity in the first system and M2 L2 is the in CGS system. Therefore we can say that the M1 equal to 10 to the power 3 M2. Why? Because M1 represent kilogram and M1 equal to mass. Mass represent in kilogram and in this case M2 represent in gram and 1 kilogram equal to 10 to the 3 gram. Similarly L1 represents meter and L2 represents centimeter
L2, and T1 in second and T2 is also in second, therefore T1 is equal to T2. Clear? Therefore, by this relation you have to convert, and always you have to remember किधर से किधर जाना है, जिधर से जाना है, याद रखिएगा, जिधर से जाना है उधर की फंडामेंटल यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे बाय दिस रिलेशन इनटू सेकंड फंडामेंटल यूनिट. क्लियर? देयरफॉर फ्रॉम हियर वी सी दैट n2 इक्वल टू 10 to the power 3 m2, 10 to the power 2 l2, t to the power minus 2 upon m2 l2 and t to the power minus 2. ठीक, हमने क्या किया, m1 में तो हमने बताया ना, जिससे तो आपको mks से cgs में जाना है तो mks को कन्वर्ट कर देना है. अगर cgs से जाना होता तो m2 की वैल्यू m1 के टर्म्स में रखते, उल्टा हो जाता है. Therefore n2, now in this case m2 cancel, l2 cancel, t2 cancel, and n2 it is equal to 10 to the power 5. न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, आपको हम बता ही चुके हैं. Therefore we can say that 1 Newton will be equal to 10 to the power 5 dyne. अंडरस्टैंड हो गया? क्लियर? नाउ समथिंग आपको बताने लास्ट में, लिमिटेशंस ऑफ लिमिटेशंस. थर्ड और फोर्थ है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. डायमेंशनल एनालिसिस. ये बच्चों हमने लिख के भी दिए हैं, बुक्स में भी लिखे हुए हैं, इसे विशेष रूप से जान लीजिए. सिंपली मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अभी इसमें देखा था, पीछे हमने एक रिलेशन निकाला था सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स में जो फॉर्मूला निकाला था वो F इट इज इक्वल टू K इंटू एम वी स्क्वायर अपॉन आर निकाला था. तो इन दिस केस ये क्या फंस गया हमारा, कांस्टेंट. तो पहला ड्रॉबैक तो यही है इसका, वी कैन नॉट फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट. ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है? कांस्टेंट इज आल्सो द टू टाइप, वन द डायमेंशनलेस एंड द सेकंड द विद डायमेंशन, बट एनीवे यू कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट. क्लियर? सेकंड वन, with the help of the dimensions you can dimensionally you can prove that formula is correct, but physically you cannot prove. For example, we can say that s it is equal to ut plus half at square. करेक्ट है? अगर देखें s इक्वल टू ut प्लस 1/4 at स्क्वायर, तो ये तो आपका इसमें डायमेंशन देखोगे तो इसकी डायमेंशन कितनी आ गई, L. इसकी भी डायमेंशन देखोगे क्या आ जाएगी, L. इसकी भी डायमेंशन देखोगे तो कितनी आ जाएगी, L. लेकिन यहाँ कांस्टेंट कितना है, Q. लेकिन इस केस में देखो तो डायमेंशन तो सेम है, ये भी L है, ये भी L है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 1/4. तो क्या ये सही होगा, ये गलत होगा, ये सही है. तो कहने का मतलब dimensionally you can prove that formula is correct, but physically you cannot prove this one. This is the main drawback of the dimensional analysis. Clear? और आपकी बुक्स में गिवन है, इनको पढ़िए, याद रखिए. विशेष रूप से यही है कि हम किसी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते और कभी भी 3 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन नहीं निकाल सकते. हाँ, 3 से अधिक तब निकाल सकते हैं अगर तीनों की क्वांटिटी केवल m, l और t में दिए, तो जब इनकी पावर्स कंपेयर करोगे तो आपको 3 इक्वेशन फाइंड होंगे, और 3 इक्वेशन फाइंड होंगे, 3 अननोन वैल्यू आप निकाल सकते हो, चौथी निकाल नहीं सकते. इसलिए वी कैन नॉट फाइंड द रिलेशन बिटवीन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज. दैट्स ऑल.